Okay, so this is going to be our last lecture because now I want to concentrate on other stuff as but this after this lecture I think you will have enough information, things uh, enough information to start making your own games. Even right now you can make your own games, but this is the UI part, which is sort of like a slightly boring part, but still uh, we are going to work on this because obviously for any game you need to have the UI, and unless you make a UI, you cannot really call the game complete. So we are going to go into the UI and do that. Apart from that, I will be passing you some links for YouTube tutorials, which are like very brief tutorials, and they just let you know about the few basic things that you must know. For example, we haven't touched upon how the maps work. Uh, but it's just very simple. Simply ये होता है कि आपका जो map होता है, okay, let me show it to you. Let's go there. So what happens is that you make suppose you make a texture like this. Okay, so it is your ground texture. So this is texture number 1, and then you create another texture, suppose like this, and you give it texture, and this is texture number 2. So you make it a slightly different ताकि ज़्यादा variety हो आपके पास. Okay, so we have texture 1, texture 2, and then you draw the map, you select the texture and you draw the map. You place the stuff around and you can put textures like this, right? And suppose I make another texture, it's texture this, and I sort of like I can make it like this, and then I do, oopsie, I do okay, so I make this third texture and I go to the map and I use this texture and I draw a road. Okay, see, so it's just fun things. So I can make it this way. So this is texture 1, this is texture 2, and this is texture 3, right? So there is, so when you come to over here, so let me put down the function we have init, and we have function update. अब तो इतनी आदत हो गई है, याद भूलते ही नहीं है. Update, and we have function underscore draw, and we have end, and just to draw we put CLS, it's clear screen, and then we do, I think we do map, and it draws the map. So if I run this, तो आपका map draw होके आ जाता है. ठीक है, ऐसा ही है ना. अब होता ये है कि you have a player, and suppose, okay, let's make the player as well. Let's go over here and we define our player. Let's suppose we have a car. So this is sprite number 4, and we come over here and we say SPR, we have 4, it's being drawn at suppose 30 and 40. Okay, so we have a car which over here. Now the car is on top of one of these sprites that we have drawn over the map. ठीक है, so आपने map draw कर दिया. तो इसमें एक होता है फंक्शन होता है, उसका नाम होता है mget, which means map get. तो mget क्या करता है कि जिस स्प्राइट के ऊपर ये है ना मैप में, तो स्प्राइट का ये इंडेक्स वैल्यू दे देता है. So suppose right now it's on top of no sprite, so let me draw it again, not here. So let me go to the map. Let me complete
अच्छा मैप जो है ना ये ज़रा इससे बड़ा होता है, ठीक है, सो इट्स द मैप इज़ बिगर, सो यू कैन यूज़ द माउस व्हील टू स्क्रॉल इन स्क्रॉल आउट. तो आप ये कर सकते हैं, यू कैन just to have some variety we put it over here, ठीक है. So now we have some map, we run it again. So now our car is on top of some sprite. अब sprite की जो index value है वो क्या है? So in order to get that, so you can always use mget and it gets you the wherever your uh, coordinate is. तो उसके ऊपर जिस coordinate पे गाड़ी है उसका ना वो sprite को return कर देगा. तो सही होता है कि फर्स्ट कहें कि आप इफ इट्स आपने एम गेट रिटर्न किया, आपने कहा इफ द एम गेट इज 1, सो द 1 इज ग्रासी लैंड, सो द कार विल मूव स्लोली. बट इफ द एम गेट इज 3, इट विल बी ऑन टॉप ऑफ द रोड, सो द कार विल मूव फास्टर. तो आप उसकी स्पीड बढ़ा देंगे. सो यू यूज दैट टू make changes to the logic of the game based on what sprite it is, on top of what sprite it is. Just sprite पे आप काम करें, ठीक है. And similarly you can play around with it and add more information and make the game much more interesting that way, ठीक है. तो आप इस तरह कर सकते हैं. So that is one thing that I hadn't covered and it's fairly simple. It's not that difficult. तो मैं आपको ना tutorials का मैं link दे दूँगा. तो you can मोस्ट लाइकली जो आपको ये जो आखिरी जो है ये जो वीडियो है इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं डाल दूंगा लिंक को. सो एनीवन कैन एक्सेस दोस दैट लिंक फ्रॉम देयर. ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स हैं. Pico-8 itself is very simple. ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स भी हैं, उससे आप सीख सकते हैं. वो जो मैं लिंक दूंगा उसमें ट्यूटोरियल्स जो है मैक्सिमम 10 मिनट का है. तो आपके और आप 1.25 स्पीड पे देखें तो वो 10 मिनट जो है 8 मिनट का हो जाता है. तो इट्स फेयरली क्विक, यू कैन डू इट फेयरली क्विकली. Okay, so now we go back to the problem at hand. अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि we want to have different screens. The first screen is going to be our menu screen. The second screen is going to be our play game or gameplay screen. Okay, so which means we define a function and let's call it draw menu. Let's end this, and the second function is function draw game, and we end it. अब इसमें हम आ जाते हैं कि finite state machine पे FSM पढ़े आपने? FSM finite state machine पढ़ा होगा. FSM नहीं? ओके. कुछ लोगों को उससे रिलेटेड नाइटमेयर्स होंगे वैसे. अच्छा, फिनिट स्टेट मशीन अगर उसके नाम को देखें, इट्स नॉट इनफिनिट स्टेट मशीन, इट्स फिनिट स्टेट मशीन, विच मीन्स दे आर फिनिट नंबर ऑफ ऑप्शंस दैट यू हैव. सो फिनिट व्हाट ऑप्शंस वी कॉल देम स्टेट्स. सो दे आर फिनिट स्टेट्स इन अ मशीन. आप जैसे कि आपका स्विच है, इसकी कितनी स्टेट्स हैं? जो लाइट का स्विच है 2, ठीक है. आप इसी तरह आप कोई भी सिस्टम उसको डिफाइन करते हुए आप स्टेट्स बताते हैं कि कौन कौन सी स्टेट है. अब जैसा कंप्यूटर की अगर फर्स्ट कहीं एक बेसिक कंप्यूटर है तो उसमें क्या क्या स्टेट्स हो सकते हैं? ऑन और क्या हो सकती है? स्लीप हो सकती है, और प्रोसेसिंग, ठीक है. आइडल स्टेट हो सकती है, प्रोसेसिंग स्टेट हो सकती है. सो अब उसमें ये होता है कि अच्छा, डू वी नीड अ स्लीप स्टेट और नॉट? ठीक है, हमारे सिस्टम में स्लीप स्टेट चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक है. स्लीप इज अगर आप देखें तो कंप्यूटर के इट्स अ वेरी recent phenomenon where they wanted to save the power, so that's why the computer goes to the sleep state. ठीक है, उससे पहले नहीं होता था, उसमें कंप्यूटर ऑन ही रहता था, चाहिए चलता रहता था. तो इसी तरह अगर सर्वर है, सर्वर कैन नॉट गो टू स्लीप बिकॉज इट हैज़ टू सर्व ऑल द टाइम. सो यू कैन नॉट हैव अ स्लीप. क्या सर्वर स्लीप चला गया आपकी साइड, आप कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाएगी. ठीक है. तो इस तरह डिपेंडिंग ऑन व्हाट द सिस्टम इज यू डिफाइन द स्टेट्स. तो उसको आप फिनिट स्टेट मशीन कहते हैं. अब हमारी जो गेम है इसमें हमारी अभी करंटली हम उसकी 2 स्टेट्स हैं. द फर्स्ट स्टेट इज द मेन्यू स्टेट, द सेकंड स्टेट इज द गेम प्ले स्टेट. सो दीज आर द 2 स्टेट्स दैट वी आर गोइंग टू वर्क विद. ठीक है. तो हम क्या करते हैं कि हम स्टेट का हम एक टेबल बना देते हैं एंड वी गिव इट अगेन 1 and 2. ठीक है. और हम कहते हैं कि करंट स्टेट कर देते हैं. करंट स्टेट is equal to 1.
सही है। और हम कहते हैं कि करंट स्टेट, और नहीं, if current state is equal to 1, then draw menu। और ये अपडेट में नहीं डालते हैं, ये इसमें डालते हैं, ये ड्रॉ में डाल देंगे। अभी मैं इसको यहाँ से कॉपी कर दूँगा, else draw game and end this। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से अलग जगह डाल दिया था। अब ड्रॉ मेन्यू में, जस्ट टू कीप थिंग्स सिंपल, वी keep it CLS, let's go give it 13, and for the game let's give it CLS and let's give it 1। इतना कर लिया। सो टेक्निकली स्टेट 1 हो गई है। अगर करंट स्टेट 1 होगी तो ये करेंगे, करंट स्टेट एल्स तो ये कर देंगे, ठीक है। हम इसको ये भी कर सकते हैं कि 1 की जगह हम लिख दें स्टेट 1, ठीक। तो ये है। अब हम स्टेट्स अगर इसको 2 करके देखें तो कुछ फर्क पड़ा? स्टेट 0 तो नहीं होता, स्टेट 1 पे तो काम कर रहा है, इट्स गिविंग अस अ ग्रे कलर, और इसमें CLS 1 की जगह हम कर देते हैं कोई और कलर। लेट्स गिव इट, आई थिंक दिस इज 12, कलर 12। सो तो स्टेट 1 होगी तो 1 दिखा रहा है, और स्टेट 2 में ओके ओके, मुझसे गलती थी, एल्स पे कहेगा तो अब सॉरी, अपने आप कंफ्यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे चेंज करना है, इट्स स्टेट 2, ठीक है। तो ब्लू हो गया, ठीक है। तो हमने स्टेट को चेंज नहीं किया था, दैट इज व्हाई इट वाज कंफ्यूजिंग मी। तो इसका मतलब ये स्टेट जो है, वी आर स्टार्टिंग विद स्टेट 1, तो इट विल ऑलवेज शो द मेन्यू। स्टेट 2 में गेम प्ले विच इज द ब्लू स्क्रीन, सो इट विल ऑलवेज शो द ब्लू स्क्रीन, ठीक है। तो ये इसका शो करेगा। So we need to have a system by which we can change the state of the game. Okay. So we go over here, we write if button suppose is for the time being we keep it left, then current state is equal to state 1, and else end कर देते हैं, and if button is right then ये else if से भी काम चल जाएगा, else if current state is equal to state 2, close function नहीं होता। अच्छा, थैंक यू। लेफ्ट राइट, ठीक है, हम कर सकते हैं। किसी को एपिलेप्टिक सीजर ना हो उसके सोचिए। सही है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें पता चल गया ओके, इफ वी प्रेस द लेफ्ट पार्ट सो इट विल शो द लेफ्ट, सॉरी द मेन्यू स्क्रीन, अदरवाइज इट विल शो अस द गेम प्ले स्क्रीन, ठीक है। तो इस तरह करेगा। तो हम करंट, हम सिर्फ स्टेट को बदल रहे हैं। अच्छा, आप कहेंगे यहाँ में सिर्फ 2 स्टेट्स हैं, तो हम इसको स्टेट इक्वल टू 1 कर देते, स्टेट इक्वल 2 कर देते, तो उसमें काम चल सकता था, ठीक है। इट बट दैट कैन वेरी बेस्ड ऑन, फर्स्ट करें कि आगे पास मल्टीपल स्टेट्स हैं, ठीक है। तो ऐसे में फिर आप क्या करेंगे कि आप ये करेंगे कि फर्स्ट के हमने कहा था कि ऑन इज इक्वल टू, हमने कहा था 1, ऑफ
is equal to 2, idle is equal to 3, working is equal to 4. ठीक है, हमने ऐसा डिफाइन कर दी नहीं. देन इन स्टेट वी विल गिव 1 2 3 and 4, ये हमने दे दिया. और यहाँ पे करंट स्टेट इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1 2 3 4 वी राइट ऑन. ठीक है, और यहाँ पे इसमें करने के लिए हम कर देंगे वर्किंग फर्स्ट करें. सो नाउ वी कैन पास द वेरिएबल्स, हमने पास स्टेट डिफाइन कर दी है. तो इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वी कैन गिव दैट द वेरिएबल नेम्स. और वेरिएबल नेम्स को यूज करते करते हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं. दैट्स व्हाई यूजिंग इट दिस वे इट्स मच बेटर. ठीक है, और इसी तरह अगर आगे चल के आपने कोई नई स्टेट बना लिया, सो यू कैन ईजिली ऐड दैट स्टेट टू द स्टेट टेबल और इट विल गेट एडेड इनटू दैट स्टेट. ठीक है, तो इस तरह आप कर सकते हैं. आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे स्टेट को बिल्कुल निकाल दें और वेरिएबल्स डायरेक्टली यूज़ कर लें. तो आप फिर कर देंगे स्टेट इज इक्वल टू, आप फिर इंस्टेड ऑफ लिखा राइटिंग स्टेट 0 स्टेट ऑन स्टेट ऑफ, आप सिंपली ऑन ऑफ वगैरह कर, आप यूँ भी कर सकते हैं. तो देयर आर मैनी वेज ऑफ डूइंग थिंग्स. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ डू यू वांट टू प्रोग्राम. ठीक है, अच्छा, आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इफ और एल्स इफ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? डू यू हैव एनी आइडिया वेयर डू यू यूज इफ? मैं जैसे मैं कर सकता इफ कर सकता था, एल्स इफ मैं कहाँ पे इस्तेमाल करूँ? व्हाई यूज एल्स इफ? जी अब्बा जी, अगर आप चाहते हैं कि हर एक इफ स्टेटमेंट को ना चेक करें, सिर्फ एक इफ स्टेटमेंट चेक करें, अगर हो रहा है वो कर ले और नहीं तो बस वही कर ले. हाँ एग्जैक्टली. ठीक है, तो यहाँ पे तो इस केस में ये है कि हमने चूंकि स्टेट हमने एक ही रखनी है. ठीक है, तो इट इज़ आइदर गोइंग टू बी द मेन्यू और द गेम प्ले. तो हमें बार बार दो इफ को चेक करने की जरूरत नहीं, वी नीड टू चेक ओनली वन इफ और उस पर वो चेक हो जाएगा. तो ऐसे में फिर आप नहीं करेंगे. लेकिन जो कीज़ प्रेस है, हो सकता है एक आदमी दो कीज़ को एक साथ प्रेस कर दे. सो यू वांट टू हैव द रिस्पॉन्स फ्रॉम बोथ द कीज़. ऐसे में फिर आप मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स रखेंगे. ठीक है, सो जस्ट कीप दैट इन माइंड. बाज़ वक़्त उसके बगैर भी काम हो जाता है. ठीक है, बाज़ वक़्त आपको एल्स स्टेटमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. आप इफ़ करेंगे तो कुछ चेंज आएगी, यू डोंट हैव टू एल्स, इट विल ऑटोमेटिकली बी एल्स एनीवे. ठीक है, सो उसमें भी फिर आप सिर्फ इफ़ आप इस्तेमाल कर सकें. यू डोंट इवन हैव टू हैव एन एल्स ओवर देयर. ठीक, तो यू हैव टू बी अ बिट केयरफुल अबाउट दैट. ओके, so now in the draw menu what we want to do is we want to draw a button. ठीक है, तो अब हमने क्या बटन ड्रॉ करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए कि बटन का बॉर्डर होना चाहिए, बटन को कहीं पे प्लेस करना है, उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए. फिर हमारे पास बटन का जो टेक्स्ट है वो कहाँ से ड्रॉ होगा, किस जगह से ड्रॉ होगा, बटन का बॉर्डर कलर क्या होगा, बटन का बैकग्राउंड कलर क्या होगा, और बटन का जो है वो हम सेलेक्ट करेंगे तो कैसे विजुलाइज हम करेंगे कि बटन सेलेक्ट हुआ है. ठीक, सो देयर आर मैनी वेज यू कैन डू दैट. फर्स्ट कहें कि अगर बटन सेलेक्ट हुआ है तो क्या होगा, उसका बॉर्डर जो है वाइट हो जाएगा सपोज, वैसे बॉर्डर जो है ब्लैक होगा. तो या फिर बटन सेलेक्ट है तो बॉर्डर और जो बटन है उनके कलर्स इन्वर्स हो जाएंगे. तो बॉर्डर अगर वाइट था तो वो ब्लू हो जाएगा, और बटन अगर अंदर से बटन जो था ब्लू था तो वो वाइट हो जाएगा. अगर आप ये चेंज लेकर आते हैं देन यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टेक्स्ट इनसाइड. क्योंकि अगर आपने ब्लू टेक्स्ट है और सॉरी आपने वाइट टेक्स्ट रखा हुआ है और बैकग्राउंड ब्लू है, आपने स्विच किया, अब जो बैकग्राउंड है वो वाइट हो गया और बटन का टेक्स्ट भी वाइट है, तो फिर वो नज़र नहीं आएगा. तो फिर देन यू हैव टू स्विच द टेक्स्ट कलर एज वेल. ठीक, यूँ कर सकते हैं. आप ये कर सकते हैं कि जैसे ही आप बटन को सिलेक्ट करें तो जो बटन है वो एनिमेट करना शुरू करते हैं. वी कैन मेक इट बिगर एंड स्मॉलर इफ वी वांट टू. ठीक है, तो वो एकदम से बड़ा हो जाता है बटन, तो उससे बाद चल जाएगा सिलेक्ट. सो दे आर मैनी वेज बाय विच यू कैन शो कि बटन कैसे आपका सिलेक्ट हुआ है. ठीक है, तो वी विल बी वर्किंग विद दैट. फॉर द टाइम बीइंग व्हाट वी विल डू इज वी विल क्रिएट अ बटन. ठीक है, तो बटन क्या है कि वी विल इनिशियली वी विल जस्ट ड्रॉ अ बॉर्डर and the background color and the text. Okay, that is how we will begin. So we will go to
init में चलिए init में चले जाते हैं. And in the init we just define let's call it okay, let's just call it but. So button has an x value which currently is 0. Button has a y value. Okay, x की value कोई रख लेते हैं. Let's make it 20. The y value, let's make it 20 as well. And then we have width रखना है, इसके चलिए width रख लेते हैं. Width is equal to let's make it 40. And height we keep it equal to 20. Then it has वही मैं सोच रहा हूँ. We have border is BDR. Okay, I'm writing BDR. BOR नहीं लिख रहा, BDR लिख रहा हूँ. तो BDR is equal to ये color है 6. And if the BDR is selected, the color is 7. And if the BDR is deselected, so the color is again back to 6. So initially वो 6 होगा. So ये हमने कर दिया. And then we put the selected, whether the button has been selected or not selected. So let it keep it false. ठीक है. तो ये हमने बना लिए. अब बटन जो है उसमें अब बटन का कलर तो हमने डिफाइन नहीं किया जी. हाँ वही अभी करते हैं. सो BG, लेट्स क्रिएट बैकग्राउंड एंड लेट्स मेक इट आई गेस BG क्या रख लें इसका 11 रख लेते हैं. ओके, द कलर इज 11, सो लेट्स कीप इट 11. नहीं अगर डार्क करते हैं, कलर इसका रख देते हैं 3. सो वी कीप इट BG इज 3. ये हमारा बटन डिफाइन हो गया. अब हमने इस बटन को सेट करना है. ठीक है. सो whenever we pass a button, so we want to set the button. So let's make a function. मैं ऐसे ही के नीचे बना देता हूँ just to keep things, ताकि मैं देख सकूँ उसे क्या हो रहा है. So we take function and we set the button. So we write button. Okay, I'll keep this as P button. Okay, so this is play button, so it's P button. So button, and it's going to be set on the X and Y values. And will it be selected or will it be unselected? So we put it selected. Okay, yes, selected or unselected. So we will pass that value. And thank you. Now we say, so the but dot x is equal to x, the button dot y is equal to y. Then we have selected but dot selected is equal to selected. And now the other part, we say okay. If selected is equal to true, then BDR is equal to BDR, sorry, button dot BDR. But dot BDR is equal to but dot BDR selected, BDRS.
else but dot bdr is equal to but dot bdr deselected एंड हमें और कोई सेट करने की जरूरत है x सेलेक्ट कर दिया y सेट कर दिया सिलेक्टेड सेट कर दिया बैकग्राउंड भी हमने सेट कर दिया कि इसका बैकग्राउंड क्या होगा तो आई थिंक वी आर गुड टू गो सो लेट्स कॉल इट सेट बी फंक्शन का नाम सेट बी कर देते हैं एंड नाउ फंक्शन it's draw b what are we drawing we are drawing the button तो सबसे पहले आ जाएगा रेक्ट और ये हमारा करेगा कहाँ पे बटन डॉट एक्स कॉमा बटन डॉट एक्स कॉमा बटन dot y comma button dot x plus width comma button dot y plus height जी बटन डॉट एक्स प्लस विड्थ है ना ताकि हमें जहाँ पे बटन का जो एक्स वैल्यू है उसके आगे से हमें स्टार्ट करना है ना Oh yes, you are right. But and but dot bdr ठीक है तो हमने रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया तो द रेक्टेंगल इज गोइंग टू बी प्लेस्ड वेयरएवर वी सेट द बटन तो अब इससे पहले कि हम आगे चले हम क्या करते हैं इस बटन को सेट करके ड्रॉ करके देख लेते हैं ठीक सो इन द इनिट इनिट में ही कर दें चलिए इनिट में ही कर देते हैं we call set b and set which button p button it's selected any x or y locations की ले लेते हैं it's on 30 comma 30 and it's selected so let's pass true बटन हो गया x और y हो गया और पास ट्रू कर दिया ठीक है तो जी ड्रॉ कॉल करना पड़ेगा सो द ड्रॉ बटन सो द ड्रॉ बी will be called inside draw menu so we call draw button which button p button so if we have done it correctly it should work ठीक है काम कर रहा है मैंने ड्रॉ बटन का एक ड्रॉ मेन्यू का बनाया था फंक्शन तो मैंने रखा था कि अगर आपकी स्टेट जो है वो 1 होगी व्हाट इनिट ओके इनिट में मैंने सेट बटन बस कॉल कर लिया बनाया था फंक्शन ठीक है तो हमारा जो बटन है वो सेट हो रहा है अब ड्रॉ को हम मज़ीद रिफाइन करते हैं ठीक है हमारा हो गया कि ड्रॉ सही काम हो रहा है सो शिफ्ट एंड कॉपी कर लिया एंटर पेस्ट कर दिया होम सो इट वाज रेक्ट फिल बटन डॉट एक्स +1 button dot y +1
x+1 समझ में आया मैंने क्या किया या नहीं समझ में आया? Okay, I'll explain. So I called the rect fill because it fills the rectangle. I started with x+1 क्योंकि वहाँ से फिल करना है, 1 से करूँगा तो बॉर्डर जो है वो हो जाएगा, कलर हो जाएगा उसके ऊपर. एंड देन आई स्टार्ट विद y+1, तो एक पिक्सल आगे कर दिया मैंने. एंड देन x+1 से चूँकि मैंने स्टार्ट किया था तो x+1 प्लस द width was 40 आई थिंक. और चूंकि मैंने एक पिक्सल से आगे किया है तो मैं पूरा अगर ड्रॉ करूंगा तो फिर वो बॉर्डर से एक पिक्सल बाहर निकल जाएगा. सो आई हैव टू सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम इट. सो मैंने 2 से सब्ट्रैक्ट कर लिया फ्रॉम द विड्थ एंड आई सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द हाइट एज वेल. सही है. और आई कुड हैव जस्ट डन लाइक बटन डॉट हाइट -1, तो उससे भी काम चल जाना था. ठीक है. बट दिस आई हैव जस्ट डन दिस सो दैट आपको समझ में आए कि एक्चुअली कैसे विजुअलाइज कर रहा हूँ मैं कि कहाँ पे आएगा. ठीक. So, and then finally I use button.bg which was the bg color. सही है. तो हमारा ये अब हो गया. Now once that is done, we have to draw the text. So we will write print the text which is play, and it's at, we will start with the button dot x plus 4. अभी I'm just 4 या 6 कर रहा हूँ. 6. तो ये वैसे ही ट्राई कर रहा हूँ. button dot y plus 6, and then you finally give it the color. So in this case the color is I'm keeping the color of the selected border. So I will keep it button dot BDRS, which is a selected border. And if I run, so हमारा play button आ गया. ठीक है. अगेन इट्स आप सेंटरिंग नहीं हुई वो सेंटर तो आप कर लेंगे, मैथमेटिक्स ऐसा इस्तेमाल करें. ठीक है. तो आपका ये प्ले बटन बन जाएगा. सही है. अच्छा, अब इसमें जो चीज़ आपको करनी पड़ेगी वो ये है कि वी आर ड्राइंग बटन, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि नाउ इन ऑर्डर टू मेक अनदर बटन विच इज़ द एग्जिट बटन, तो उसमें मैं प्ले नहीं छोड़ सकता यहाँ पे. ठीक. सो विच मीन्स वी हैव टू चेंज दिस फंक्शन. सो वी पास द txt over here, and instead of play we write the txt. ठीक है. और बल्कि इनफैक्ट हमने टेक्स्ट डिफाइन नहीं किया था. सो वी राइट यूं कर लेते हैं, टेक्स्ट इज इक्वल टू प्ले. तो इसको हम आगे चल के इसको हम चेंज कर सकते हैं. इंस्टेड ऑफ पी बटन वी कैन मेक इट एनी अदर बटन एंड देन वी यूज दैट बटन दैट वे. ठीक है. हम इस तरह कर सकते हैं, लेकिन फॉर द टाइम भी हम ये कर लेते हैं. So instead of passing text over here, we don't do that. We just do it but.text. Oh, unclose ऊपर comma. ठीक है. तो आपने जो टेक्स्ट डिफाइन किया है वो आपका हो गया. एंड नाउ इफ यू वांट टू क्रिएट एन एग्जिट बटन, ठीक, तो आप ये पी बटन को कॉपी कर लें.
आइडियल ये होता है कि आप ना ज़्यादा ना बनाए बटन्स, एक बटन बना के उसी में आप वेरिएबल्स रखें, वेरिएबल्स को आप चेंज करते रहें, दैट इज़ द आइडियल वे. लेकिन चूँकि we do not have a lot of buttons over here, we have just two buttons, so let's just copy paste it. And instead of P button, we have the E button, which is the exit button. And instead of play, we have exit. और इसमें हम कर लेते हैं कि एग्जिट के लिए कलर 8 रख लेते हैं. सो ओवर हेयर BG, let's make it 8. So now we set the button. We set the button which is E button, and ये 40 से स्टार्ट किया था इसने, कहाँ से ड्रॉ करना शुरू किया था हमने? विड्थ हाइट इसकी 20 रखी है हमने, तो लेट्स मेक इट 60. So it starts from 60 height and it's deselected. It's false. And we set the button and then we draw the button. So in draw menu, we write draw B, which is E-but. E-but. ठीक है? So the play button is selected, border उसका white, उसका grey है, हम grey को change कर देते हैं, इतना visible नहीं है. So deselected को हम कोई और color value दे देते हैं, let's give it 1. Same here. ठीक है? So we can shift between the two. So अब हमने सिर्फ ये करना है कि when we select the play button, it should play the game. The exit पे should exit the game. तो अभी तो हम लेफ्ट राइट पे कर रहे हैं. अब हमने अगली दफ़ा क्या करना है कि जो प्ले बटन सेलेक्ट हमें पता हो कि प्ले सिलेक्टेड है कि नहीं है, एंड देन इफ यू प्रेस एक्स तो इट शुड जस्ट प्ले द गेम. ठीक है, तो एकदम सीन हमारा शिफ्ट हो जाना चाहिए. हमने ये काम करना. तो हम क्या करेंगे कि करंट स्टेट नहीं, अब हम करेंगे कि बटन स्टेट, बल्कि करंट बटन अगर आप करें. सो वी कीप करंट बटन is equal to 1. तो इसको फिलहाल कमेंट आउट कर देते हैं. इसको कॉपी कर देता हूँ मैं. कॉपी, लेट्स कमेंट दिस आउट. If button down, current button plus equal to 1. If current button is greater than 2, then current button is equal to 1. ठीक है, मेरे पास दो बटन है. पहले बटन की स्टेट 1 पे जो है वो प्ले बटन सेलेक्ट होगा. अगर हम डाउन दबाते हैं तो द स्टेट विल बिकम 2, सो द सेकेंड बटन विल बी सिलेक्टेड, एंड वी प्रेस डाउन अगेन तो वो 3 हो जाएगा. अब 3 पे इट शुड गो बैक टू द प्ले बटन. ठीक है, एग्जिट के बाद प्ले बटन में जाएगा, तो इसलिए हम उसको दोबारा स्टेट को 1 कर देते हैं.
So if current button is 1, हम इनको कॉपी कर लेते हैं. इधर डाल दें कहीं और डाल दें. If current but is equal to 1, then else और हम बटन अप का सेट कर देते हैं. इफ बटन हमने अप दबाया, अप. इफ करंट बटन इज इक्वल current button plus minus equal to 1. If current button is less than 1, so current button let's make it 2. ठीक है. ये गलत हुआ. अच्छा ये कहाँ से आ गया? एक मिनट. क्या कर दिया मैंने, क्या गलती कर दी? ये नहीं आएगा इसमें, गलती से कॉपी हो गया. फिर सो इफ बटन इज, हम फिर से चेक करते हैं. अगर हमने नीचे का दबाया करंट बटन जो है उसमें हमने एक ऐड कर देंगे. अगर वो इट बिकम्स मोर देन 2 देन द करंट बटन बिकम्स 1. सिमिलरली हमने ऊपर का दबाया, इट गोज बिलो 1 देन इट मेक्स इट 2. ठीक है, करंट बटन 2 कर दो. अब फिर चेक करते हैं कि अगर करंट बटन आपका 1 है तो पी बटन को ट्रू करते हैं और ई बटन को फॉल्स करते हैं. लेकिन अगर आपके पास 2 है तो पी बटन को फॉल्स कर देगा, ई बटन को ये ट्रू कर देगा. ठीक. और हम कर देते हैं कि इफ बटन एक्स then and if current button is equal to 1, then हमने ऊपर क्या किया था, करंट स्टेट इज इक्वल टू स्टेट 1. करंट स्टेट इज इक्वल स्टेट 2 हो जाएगी. else it will just print game exit. So I guess this is okay. Which is anything which you don't find good in the logic. मेरे ख्याल में सही है. I haven't tested it. So let's run. और error आ गया. Unclosed function at line 55. Line 55.
एम नहीं लगाया हाँ कहाँ नहीं लगाया, ये चेक करो। इसमें नीचे सिग्नेचर। हाँ आपने वो दूसरे एफ के लिए आपने वो लगाया M। ओह फिनिकी है थोड़ा सा। तो इसमें हमें कुछ रखना पड़ेगा, वी हैव टू, बट यू गेट द आइडिया राइट। So yeah, that's a finicky. We have to come up. I think there is a way by which we can uh, limit the update. I think we can do that in, instead of doing it in the update, we will do it in the draw function. ऐसा होना नहीं चाहिए। हाँ फ्रेम्स कर देंगे उसमें, फिर पता है क्या होता है, अगर आप फ्रेम्स पे लिमिट करें तो उसमें ये होता है कि बाज़ औक़ात आप जब डाउन दबाते हैं ना तो आ, वो रजिस्टर नहीं होता है, क्योंकि जो फ्रेम होता है ना वो स्किप हो रहा होता है, तो बाज़ औक़ात वो प्रॉब्लम आ जाती है। तो दे ऑब्वियसली दे मस्ट बी अ वे ऑफ डूइंग इट बेटर, लेकिन इन इन क्या कहते हैं, अगर आप इसका वैसे देखें जो इसका कोड है, प्रिंट एग्जिट क्यों नहीं किया था इसने, ये बटन एक्स, oh yes you are right। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि अपडेट के अंदर है, यू आर राइट। ठीक है, तो इसमें हम करें, सर्च कर लें हाउ टू एग्जिट गेम, एग्जिट गेम इन Pico 8, क्या कह रहा है। So there is something over here, use the command stop लिखा हुआ है, okay। So we come over here and when we exit, so we write stop, so stop हो गया, ठीक है, ओके। So we can select the menu and then we press X, it plays the game, and then we can stop the game। So you can scroll down. Hmm? You can scroll down. And we can at the same time, what we can do is we can do this. So you can always come over here and Up and down. Nothing on pushing.
you can just add sfx and 00, and the same can be added over here. sfx 00. ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आपको याद है पार्टिकल्स आपने किया था, तो आप जैसे ही अप दबाएं तो जो बटन सेलेक्ट हो उसके पीछे से पार्टिकल्स थोड़े से निकलें. यू कैन इवन दैट डू इट दैट वे. ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं कि जो जो सिलेक्टेड है उसमें पार्टिकल्स पीछे से निकलते ही जा रहे हो, निकलते ही जा रहे हो, sort of like it's being selected. ठीक है, तो obviously you will have to program the particles accordingly, कि वो इस तरह ना हो कि लगे बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ ही निकल रही है, तो it should be for a very small duration आपको आए, तो you can mix and merge things together to make something. Yes, क्या चीज़? स्टॉप का सिंपल ये था कि हमने कहा कि अच्छा अगर आपके पास करंट स्टेट जो है वो अगर 2 नहीं है, ठीक है, 1 है, तो मैं कि आपके पास एग्जिट बटन सिलेक्टेड है, तो आप स्टॉप का फंक्शन कॉल करें तो वो उससे बाहर निकल आता है Pico-8 से, तो आपकी गेम बंद हो जाएगी. दैट्स इट. आप पहला बटन दबाएंगे करंट बटन, तो उस पर क्या होगा कि वो गेम प्ले स्टेट पे चला जाएगा. देन यू विल प्ले द गेम इन दैट स्टेट. ओके, सो नाउ व्हाट वी हैव कवर्ड. सो अगर हम देखें कि इस वर्कशॉप पे हमने क्या किया है, ठीक है, तो अच्छा बाकी चीज़ें दे आर लॉट ऑफ ट्यूटोरियल्स ऑनलाइन जिससे आप इसको मज़ीद इन्हांस कर सकते हैं अपनी लर्निंग को. वरना हमने वैसे हमने क्या क्या सीखा. सबसे पहले हमने सीखा हाउ टू प्ले अ गेम. there is the update part where you do all the updates. There's a draw part where you draw everything, and there's the initializing part where you initialize the actual game. We learned a bit of math, how we can use math to create physics, how we can use math to create homing missiles. Uh, we also learned how we can create particles. The particles can be used to add fire effects, smoke effects, explosion effects. We learned how to animate ours through sprites. We can switch the sprites. We Okay, we did not learn the collision detection. Okay, we did not do that. I was hoping to do it here, but there are still a lot of tutorials online. You can easily learn it that way, or you can create your own logic. मैं उसका लिंक इसमें दे दूँगा. And then we also learn how to make the UI, how to switch between the UI, switch between the states, and the finite state machine. अब जो finite state machine है वो आपकी उसके ऊपर प्लेयर्स के ऊपर भी चलती है. फर्स्ट कहें कि आपके पास एक एनिमी है, एनिमी की एक स्टेट है जिसमें है कि आइडल है, खड़ा होके ना वो खड़ा होके सो रहा है. उसके बाद कुछ फ्रेम्स के बाद स्टेट चेंज हो रही है इनटू पेट्रोलिंग, तो फिर अब वो लेफ्ट राइट पेट्रोल कर रहा है. फिर जब आप उससे करीब जाते हैं तो उसकी स्टेट जो है वो पेट्रोलिंग से आ जाती है एग्रेसिव, तो फिर इट स्टार्ट्स फाइटिंग यू. बट इफ़ यू रन अवे तो उसकी फिर से जो स्टेट है वो पेट्रोलिंग पे या फिर आइडल पे चली जाती है. तो आप सिंपल फिनिट स्टेट मशीन. अच्छा, फिनिट स्टेट मशीन बनती कैसे है ये ख्याल रखिएगा. जो है फिनिट स्टेट मशीन जो है उसमें आपका इस तरह का होता है. यू ऑलवेज डिफाइन इट लाइक दिस, कि आप कहते हैं भाई इनिशियल स्टेट 1 है, एंड इफ समथिंग हैपन्स आई विल गो टू स्टेट नंबर 2.
अब नाउ फर्स्ट कहेंगे स्टेट नंबर 1 थी आइडल, आइडल से मैं स्टेट नंबर 2 पे चला गया, ठीक, विच इज अ वॉक, वॉक पेट्रोल वट एवर, ठीक है। अब वॉक से आई कैन गो टू स्टेट नंबर 3 विच इज सपोज फाइट, and when the fighting is done I can go back to the idle state, ठीक है। लेकिन मैं इस पर सेट कर देता हूँ कि फ्रॉम फाइट आई विल नेवर गो टू द वॉक स्टेट, आई विल ऑलवेज गो टू द आइडल स्टेट, ठीक है। तो फिर आप ये एरो नहीं बनाएंगे One of three stages. जी, हमेशा at least one of three stages है. हमेशा 1 ऑफ 3 स्टेजेस होता है, ठीक। और इसी तरह आई कैन गो फ्रॉम आइडल टू वॉक, आई कैन गो फ्रॉम वॉक टू आइडल बैक, ठीक है। तो आपको बेसिकली यहाँ पे एक वेरिएबल रखना पड़ेगा, अब बूलियन रखना पड़ेगा आपको। जब 1 होगा वो बूलियन तो आप वॉक स्टेट पे चले जाएंगे, जब वो बूलियन 0 होगा तो आप आइडल स्टेट पे चले जाएंगे। आप ये कर सकते हैं, या फिर आपने इसी तरह आप वॉक पर हैं और वॉक पे ये है फाइट का, फर्ज करें कि फाइट का आपके पास है कि इफ़ इट इज़ फाइट, अगर जैसे ही फाइट एक्टिव होगा तो इट विल गो फ्रॉम 2 टू हेयर, ठीक है। अब उसके बाद अगर फाइट जो है अगर 1 होगा तो हो जाएगा, 0 होगा तो कुछ नहीं करेगा, इट विल स्टे देयर, इट विल जस्ट कीप ऑन मूविंग बिटवीन दीज स्टेट्स। और जब फाइट पर है तो फाइट पे जब ये आइडल पे ये जा सकता है, अगर 1 हुआ तो आइडल पे चला जाएगा, अदरवाइज इट विल कीप ऑन फाइटिंग। सर आप एक दूसरे लेवल को जो कह रहे हैं, हमने जो किया है कि हमने बस स्टेट लिखा 1 2 3, तो वो नहीं सॉल्व कर सकते हैं? Because state one वो है, तो स्टेट चेंज हो रही है, वो तो है आप कौन सी स्टेट पे चले गए हैं, लेकिन उस स्टेट पे जाने के लिए कोई एक्टिवेटर तो चाहिए ना आपको, ठीक है ना। तो एक्टिवेटर कुछ भी हो सकता है, एक्टिवेटर हो सकता है कि आपका डिस्टेंस जो है वो कम हो गया, तो ऐसे में वो स्टेट को चेंज करेगा, यू विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेट। सो द एक्टिवेटर, आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्टिवेटर हियर, ठीक है, कि किससे आप स्टेट पे जाएंगे, किससे आप स्टेट पे, फिर कुछ एक्टिवेटर को प्रायोरिटी होती है, कुछ को कम प्रायोरिटी होती है। तो आपका ये जो फिनिट स्टेट मशीन, दिस इज द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ एआई दैट यू प्रोग्राम इन गेम्स, मोस्ट बेसिक फॉर्म, ठीक, क्योंकि उसमें स्टेट्स डिफाइन कर देते हैं। अब इसमें ये होता है कि आप जैसे फर्ज करें कि आप इसमें एक और स्टेट डाल देते हैं, उससे क्या होगा कि मैं आइडल से फर्ज के मैं आइडल से फाइट पे जा सकता हूँ, मैं आइडल से थर्ड स्टेट पे जा सकता हूँ, और थर्ड स्टेट से मैं इस स्टेट पे जा सकता हूँ, इस स्टेट से मैं इस स्टेट पे जा सकता हूँ, इस स्टेट से वापस स्टेट पे जा सकता हूँ, फिर स्टेट पे इस स्टेट पे जा सकता हूँ, फिर स्टेट से वापस इस स्टेट पे जा सकता हूँ। अब मैंने एक डाली है और ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया, अब मैं अगर इसमें एक और डाल दूंगा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो फिनिट स्टेट मशीन जहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड आपको काम करने, वहाँ पे वो फीजिबल नहीं होती इस्तेमाल करना, तो वहाँ पे फिर आप डिसीजन ट्रीज इस्तेमाल करते हैं, ठीक। अब डिसीजन ट्री आप अब ट्री क्या चीज़ है, basically branch off करता है. यस तो अगर आप डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़े हुए हैं तो इट विल मेक सेंस कि डिसीजन ट्री क्या होती है, ठीक है। क्योंकि उसमें आप ट्रीज पढ़ेंगे, जब ट्री पढ़ेंगे तो आपको डिसीजन ट्री समझ में आ जाएगी। डिसीजन ट्री आ जाएंगे तो फिर आप एआई, इफ़ यू वांट टू इम्प्लीमेंट बेटर एआई, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड डेटा स्ट्रक्चर्स। अभी जितनी आपके अंडरस्टैंडिंग है विच इज़ बेसिकली इफ एल्स, तो उसमें आप फिनिट स्टेट मशीन पे आप काम कर सकते हैं आराम से, बट इट विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड। वंस इट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड, दैट इज वेयर योर डेटा स्ट्रक्चर्स विल कम इन, एंड डिसीजन ट्री इज एन एडवांस डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर समझेंगे, ट्री समझेंगे, तो फिर आप डिसीजन ट्री में जाएंगे। और फिर वंस यू इफ़ यू वांट टू मेक इट इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड, तो फिर आपके पास आया था प्लानिंग ग्राफ, कि उसमें जो आपका एआई है वो एक पूरा प्लान बनाता है, उसके ऊपर चलता है। आप प्लानिंग ग्राफ को में काम करने के लिए आपको ग्राफ पढ़ना ज़रूरी है। ग्राफ किस में आप पढ़ेंगे, डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। सो एवरीथिंग स्लोली बिल्ड्स अप, आपके जो सारे कोर्सेज हैं दे विल स्लोली बिल्ड यू अप for doing complicated things. So that is why it is very important that you have a very good understanding of the intro to programming, the object-oriented programming, data structures, and finally algorithms. ठीक है, तो ये वो कोर्सेज हैं कि जिसमें आप ना you cannot take them lightly. आप समझ लें कि आपके ज़िंदगी मौत का सवाल है, आपने इसको जितना अच्छा समझना है आपने इसको समझना है, ठीक है। ओके, सो
So that ends our tutorials. So there will not be any class tomorrow or any other day. So thank you for coming and thank you for showing interest. I hope it was a good learning experience. Yes, sir. And I will be uploading these videos and give you the links so that you can follow. Okay. Thank you. Thank